Hello everyone. Welcome live in conversation by MentorKart. This is Ashish Khare, founder MentorKart. First of all, I would like to thank you all that you have been watching our videos and live sessions very regularly. As you are aware that MentorKart bring these live interactions with industry leaders, educationists, entrepreneurs, investors, coaches and mentors to share their views and answer your queries and questions you may have. In continuation of this initiative today, our special guest, Mr. Dhruvam Thaker, he's an entrepreneur and one of the greatest LinkedIn influencer I've seen. A self-motivated person, ambitious, performance entrepreneur at the Smart Taxi, with a vision to become India's number one cab company in a customer satisfaction by 2025. And that's what is our today's agenda is. It's all about customers, and customer experience. And I'm telling you, I have as a customer of Smart Taxi recently became experienced that in the market like this, which is very competitive and has been acquired by most large players, Smart Taxi is making its own position. And let me welcome Dhruvam Thaker. And by the way, do not forget to go to mentorkart.com and sign up for a mentorship programs at there. So let me bring Dhruvam Thaker on the screen now. Hey Dhruvam, good morning. Thank you very much for your Good morning. time. Good You morning. joined us today. Thank you. And Thank you. Thank I still remember that 1.5 years ago when I was trying to envision the mentor card, and you were the one who traveled from Ahmedabad to Delhi and had that one interaction. That video is still with mentor card, and people are watching it. One of the most right. watched video that is right. And so, guys, Dhruvam is here, and you might have seen his post, always inspirational and lot of learning in those posts I have seen on the LinkedIn. So Dhruvam, over to you, and we are going to talk about maybe I'll request you to give an opening remark first of all on the customer. That's what I've seen you have been writing about all the time. So that's the Right. agenda, right? See, thank you first of all, Ashish, and thank you everyone for joining this live on Sunday. It's a beautiful morning here in Ahmedabad, and I joined from Ahmedabad, Gujarat. Yes, you rightly said, Ashish, because that is the core focus always for the smart taxi, and that is the reason why we have started this company for. The main reason why we continuously focus on customer because there are if I take you in the past that whenever I used to travel during my corporate tenure, I came to know that there are I'm talking about in the scenario of somewhere around 10,000, 10, 11, 12, where companies like Uber, Ola, they were just popping it up, and at that point of time there was more about people focusing on affordability rather than experience. Parallelly, if we consider about airways and hotel industry, they both were constantly focusing on delivering the qualitative experience to the users. So that is where the thought came in my mind that why can't we club all these three together? That is a cab which is offering hospitalities like airways and features like well-starred hotel. That becomes the bottom Hmm. line for the smart taxi in 2012. So 2012 to 2016, I was continuously working for a corporate tenure, and it took 4 years for me to get the courage required to start the company. So that is how the journey happens. And yes, why we are continuously focusing and only focusing on customers, because of they were the initial ones who have actually believed in us and helped us in bringing growing our company. Because whenever I approach to the banks, whenever I approach to angel investors, whenever I approach to VCs, everybody, they have never seen any kind of a X factor in this concept in the initial days. That is in 2016 when we started the company. So that is where the thought came in my mind that why can't we club all these three together? That is the reason why we have started this company. Hello Dhruvam, I think so we lost you. Hello. I think so he lost his internet connection. So let's Yeah, yeah, wait. yeah. That's Yeah.
Okay, so that is the reason, why we focus entirely on customer, and that is why everything a customer comes always first at the smart taxi. So neither we focused on our profit, neither we focused on our losses, but whenever we see that yes, there is that is the customer what we have to deliver and we have to delight, that is where we constantly and we only focus onto that point, and that is probably the reason in span of 4 years, despite of not offering or not having any external funding, despite of not having any technological hi-fi background, still we are growing day by day, still people are preferring us because of the human touch and personalized things what we include in each and every of our service. So that is what a small brief about ourselves and our company. And I would also like to thank you, MentorKart, for providing us this opportunity to once again share about the journey. But we met 1.5 year ago. At that point of time, we were somewhere around, I think, in 12 or 15 cities. Right now, we are into 42 cities. So in 1.5 year, despite of having pandemic, we definitely grown ourselves well, and everything is because of customers and fleet partners, those who are representing us onto the ground. Yes, Ashish, over to you. Thank you very much, Dhruvam, for sharing that growth. And I've been watching that growing every day. Every month you are adding cities. And as you rightly said about human touch, I mean, saying no one can replace that. In any field, when you talk about today, when you call to any toll-free number, what you expect the most is that let the person pick up and call to you, talk to you. But in most the big organizations and big setups, I understand that nobody can do everything on phone. So many people need it for that when you have a high volume. But actually every customer when you talk to, he would expect that why should I go to through so many options? Can't I press 9 or can't I press 8 and then just go and talk to that person? And Right. unfortunately, every time you feel as a customer, you see that all these options does not address your problem. Somehow, Right. whatever option you Correct. listed, your problem is Correct. not at all there all the time. Yes. So that is rightly said. So coming to Dhruvam onto the point again with back to the customer, because customer is so important that without that nothing is there, no business exists, right? So how do you define, and nowadays in all big organization, small organization, people have a separate focus on customer success department, right? So there's a separate department has been created called customer success, or maybe the existing one have been renamed as a customer success, whatever it is. So how do you actually define the customer success is? How one know that okay, I can say now I'm able to meet the customer success criteria? How do you define that for yourself, and maybe for general, not many founders are watching this or maybe watching this later on. How would you like to define customer success? See, customer success for us is it is very simple. As I already stated, that rather than focusing on any other business parameters, we have only constantly keep focusing onto the customer delight. So it is very simple. See, हम लोग जब भी कोई भी business, जैसे as a individual, I always believe in simplifying the things. मुझे कोई hi-fi jargons I have never used, never I like to use it. सो बहुत सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ कस्टमर सक्सेस कि आपके पास जो भी आया है, अगर अगर वो आपके पास से सर्विस लेता है एंड इफ ही इज फीलिंग हैप्पी, इफ ही इज गिविंग गुड फीडबैक, और अगर उनके रेफरेंस से वी गेट फर्दर कस्टमर्स, दैट इज व्हाट द कस्टमर सक्सेस फॉर अस. सो हमने ना तो कभी उसमें ये देखा है कि कितना हम लोग उस प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना, काफी बार हमारे पास इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए वेयर वी मेड लॉसेस इन सर्विंग टू द कस्टमर्स, बट हमने आज तक कभी भी वहां से फोकस नहीं हटाया है. सो दैट इन सेल्फ हेल्पिंग अस. तो हमारे लिए क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, दे प्लेस इंक्वायरीज, फ्यू ऑफ द कस्टमर्स दे प्लेस ऑर्डर्स. सो इट इज नॉट नेसेसरी, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा इंक्वायरी टू ऑर्डर कन्वर्जन कितना है. हमने ऑलवेज इसी जगह पे फोकस रखा है कि जो भी हमारे पास आता है, वेदर बीइंग अ फर्स्ट टाइम इंक्वायर, वेदर बीइंग अ रिपीट इंक्वायरी, वेदर बीइंग अ फर्स्ट बुकिंग और रिपीट बुकिंग, हमने चारों को एक ही तरीके से असिस्ट करना है. यू राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशंस कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आज भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनलाइज टच पे मिसिंग होते हैं. जैसे उसीलिए हमने कभी भी हमारे हेल्पलाइन पे आप जब भी कॉल करते हैं, वी हैव नेवर केप्ट, वी हैव केप्ट प्रोसेस वेरी सिंपल. आप नंबर डायल कीजिए, 3 4 या 5 रिंग के अंदर डेफिनेटली समबडी फ्रॉम आवर टीम विल लिफ्ट अप अ कॉल. ही विल टॉक टू यू डायरेक्टली. आपको डिफाइन नहीं करना है कि एक दबाइए सेल्स के लिए, 2 दबाइए बुकिंग के लिए. नो,
You don't have to press anything of the numbers. You just dial our number 823 888 333 straight away you will connect to the executive. He will assist you in the real time. आपकी query समझेगा. अगर आप कोई टिपिकल, बिकॉज हर बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग चैट में, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, पीपल हैव अप्रोच्ड अस टू इम्प्लीमेंट दैट, बट वी सेड नो टू देम कि नहीं, हम जो भी जिस वजह से कस्टमर्स हमें प्रेफर करते हैं, जिस वजह से हमें वो पसंद करते हैं, अगर हमने उसी चीज को साइड में रख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वी वांटेड टू ईज आउट थिंग फॉर आवरसेल्फ, वी हैव नेवर कंसिडर्ड दैट एज अ ऑप्शन. सो हमने आज भी चीजें मैन्युअली ऑपरेटेड रखी हैं. एवरीथिंग हमारे यहाँ पे मैनुअल होता है, बट हम लोग हमारी प्रोसेसेस उस टाइप से डिफाइन की है कि जिसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं. ऐसा नहीं बोलूंगा कि एरर्स नहीं होती हैं, एरर्स जरूर होती हैं, बट उस एरर को हम हर बार दूसरी बार रिप्लिकेट ना हो उसको जरूर से देखते हैं और उसके बाद में प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करते हैं. तो हमारे लिए कस्टमर रेशियो हमारे कस्टमर का स्माइल है, उनका रिपीट बुकिंग रेशियो है, और उनकी तरफ से कितना You're losing Dhruvam again and again. Maybe guys give us a second. So as Dhruvam rightly said, I think so that customer success defines that what is he's experiencing as a customer, and that experience of him is getting converted into the more business or its feedback and happiness. That is what actually the great thing is about. Coming to the point, like you said, that you have kept many processes manual, means the operational manual, but processes are defined. I fully agree. I mean, saying that everybody knows the story of Dibbawala in Mumbai, right? What absolutely. automation they use, we all know, right? But the processes and the steps are so strong that even the quality is maintained and everything is maintained. But asking from you, do you ever realize or you think now at this stage after reaching to 44 cities that keeping those operations manual is becoming hindrance to your scalability, or maybe to become the large one or something like that, or maybe even to get more investment if you want to at this stage or at some stage? What is your thoughts on that area? Okay, I'll like to answer in the reverse way. सबसे पहले जैसे लास्ट में आपने बताया it is about investment. So let me just clarify that we do not have any plan for going for investment as of now, because हमारे सारे business parameters are working very well in favor of us, and thanks for the customers, thanks for the fleet partners, those who are constantly supporting us. जितने भी introductions या जितने भी नए features हम लोग लेके आए हैं, we have always kept themselves into center. I myself drive a lot of time onto the ground by considering or becoming a driver so that I can take real time feedbacks from the customer, and that is how we improve and we introduce the things which are more relevant on the ground. So ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिस में बैठ के मैंने डिफाइन कर दिया टेबल पे बैठ पे and then we roll out. So no, we actually work on the ground, then we realize what are the problems customers are facing, और छोटी छोटी चीज, बहुत छोटी चीजें होती है जो हम लोग वहां से उठाते हैं, but when we implement that onto ground, customers actually feel themselves very happy कि इतनी सारी minute detail पे भी ये लोग focus. So investment का this is the process. अभी हमारे पास ऐसा कोई we are not in a need or we are not going to this, because it is our personal inspiration or aspiration that we wanted to run this company self-funded till maximum level we can go, and we also are planning to go for global as well. So second thing is like जैसे processes के hindrance होते हैं, हर एक क्वार्टर के बाद में we have a process that we do customer service. So हम हमेशा से customer service करवाते हैं every quarter के बाद. So हर एक customer service में सबसे ज़्यादा surprised to see that why people are helping or people are rating us more. So that is only because of two things. सबसे पहले कि जो हमारी प्रोसेसेस हमने रखी हैं जिस हिसाब से वो हमें बुक कर सकते हैं, दैट प्रोसेस दे आर एक्चुअली हेल्पिंग, बिकॉज वो they are, because most of the people they never wanted, because उनका ये रहता है कि वो अगर एप्लीकेशन में होते हैं तो there might be some difficulties in terms of net connections, in terms of technological disadvantages. So पॉलिसी जो इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, काफी बार उनको ये लगता है कि अगर मैं कोई ऐप में लॉग इन कर रहा हूँ तो मेरे डिटेल्स, मेरे सारी प्राइवेसीज दैट माइट गेट लूज. सो ये सारी चीजों से हमने अपने आप को बिल्कुल परे रखा है, बिकॉज हमारा कोर फोकस बिजनेस पे हो पाए. ज्यादातर कस्टमर्स हमारे जो भी प्रोसेसेस के लिए दे मैक्सिमम दे हैव रेटेड अस इज बिकॉज ऑफ आवर सिंपल प्रोसेस, बिकॉज ऑफ आवर डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ कॉल सेंटर्स. दूसरी चीज जो है, जो हर एक राइड पे कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी कंपनी में एक साथ
1000 राइड आ जाए, या दैट इज नेवर आवर फोकस इज. हम वेयर वी फोकस एक्चुअली इज, if we execute around 50 rides or 20 rides a day, maybe 25 rides a day, of course this is just an example number because exact I'll not be able to share, but अगर हम जितनी भी राइड करते हैं, हमेशा से हमारा एक ही जगह पे फोकस रहता है कि हर एक कस्टमर को ये लगना चाहिए कि मेरी राइड पर्सनली फोकस हो रही है. जैसे यू बीइंग अ कस्टमर, आई हैव सीन दैट टिल नाउ देयर आर 2 or 3 राइड्स व्हिच हैज बीन बुक्ड बाय यू फॉर आउट स्टेशन. हमेशा से हमारी ऑलवेज ये प्रोसेस रही है कि पहले आपको असिस्ट किया जाता है, आपको बुकिंग कंफर्म किया जाता है, फिर बिफोर यू वेक अप वी वेक अप आवरसेल्फ एंड वी इंट्रोड्यूस एंड वी मेक श्योर कि आपके सारे अरेंजमेंट लाइन अप है. सो आई एम श्योर एक घंटे पहले आपने जब वो सपोज आपका पहला बुकिंग अगर मान लीजिए अराउंड 6 AM आपका पिकअप टाइम रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि 5 बजे के आसपास एक मैसेज जरूर आया होगा जिसमें लिखा होगा कि सर वी आर थ्रू विद द चेक एंड वी आर ensuring that your cab will reach on the time, along with all other necessary things what a customer you should know with. So जैसे टोल पार्किंग आपको पे करना है, तो हमने सारी क्लैरिटी हम एडवांस में कस्टमर को देते हैं. और यही चीजों की वजह से ये सारी प्रोसेस आज भी मैन्युअली फॉलो होती है, बट हमारे पास ग्राउंड वी हैव सर्टेन पॉलिसी सेट जो हमने हर एक पार्टनर को बताई है. जैसे दे हैव टू शेयर देयर फोटोग्राफ्स, दे हैव टू शेयर देयर कार कंडीशंस, दे हैव टू शेयर सम ऑफ द टाइम वी में फ्रीक्वेंट ask them to share the sanitization videos as well. So उस तरीके से सारे वीडियोस हमारे पास हम लोग लेते हैं, उसके बाद में ही हम इंश्योर करते हैं कि ये कार कस्टमर के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है. तो आपका 6 बजे से शुरू होता होगा, लेकिन हमारी प्रोसेस सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है. सो 4 बजे से हम लोग उस कार को पीछे ट्रैक करते हैं until and unless it reaches to your pickup point, and we ensure कि आपके पास जो भी कार आती है वो बेस्ट मेंटेन्ड हो, वो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, और 15 मिनट के पहले जब भी आपने मंगवाया उससे पहले कार आपके पास आके खड़ी हो जाए. एंड देन वी सेंड अ मैसेज टू यू दैट योर कार हैज रीच्ड एंड यू कैन बोर्ड द कैब. सो ये सारी प्रोसेसेस एंटायरली मैनुअल है एट प्रेजेंट. इसमें हम लोग डेली every time we go through the process, we make engineering, because personally being part of a corporate company before, ये मेरा core agenda पहले भी रहा है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग का, प्रोसेस रीडेवलपमेंट का. सो मैं पर्सनली इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, और एवरी टाइम हम थोड़े समय के बाद में कस्टमर्स के इनपुट हर एक प्रोसेस पे जरूर लेते हैं. तो सिंस यू हैव जॉइंड आवर कस्टमर क्लाइंटेल बेस रिसेंटली, सो आई एम श्योर फॉर द नेक्स्ट सर्वे जब भी आपके पास है, तो यू विल ऑल्सो गेट अ लिंक टू फीडबैक आवर सर्विसेज और एनी इंप्रूवमेंट्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव. तो ये हमारी सारी साइकिल्स अभी तक रही हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले कभी हमें ऐसा लगता था कि ये प्रोसेसेस काफी लंबी है, हमें इसमें अगर जाने से हमारी चीजें कट शॉर्ट होने से जल्दी मूव हो सकती हैं, बट फिर हमें कहीं लगा कि नहीं यार, अगर हम इसमें से डेविएट हो जाते हैं तो वी माइट एंड अप इन लूजिंग आवर क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाट द कोर वी वांटेड टू ऑफर टू द कस्टमर. सो उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. प्रोसेस हमने जो सेट की उसमें रिफाइनमेंट्स जरूर किए हैं, लेकिन हमारे जो कस्टमर एक्सपीरियंस पे उसमें कहीं पे भी आंच नहीं आनी चाहिए. ये हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है. तो उस पे आज भी अड़े हुए हैं, आज भी कंटिन्यू है. और इसी के साथ इवन आगे जब भी हम लोग स्केलेबिलिटी करते हैं, अब तक ऑलरेडी इंडिया में स्केलेबल हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में भी जब ग्लोबली भी होते हैं, तो आज तो फिर भी उस समय पे हमारा पर्सनल टच और हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा टिल द टाइम आई एम मैनेजिंग द कंपनी. So that is what I can assure to answer your question, Ashish. Over to you. Great, Dhruvam. I think so. And this makes me ask another one, which is customer retention, right? So we talk about customer retention. We talks about replicability. We talks about customer satisfaction. Then we talk about what you call as customer experience, right? So these all is co-linked, right, in terms of interlinked as an operation. Not from a smart taxi perspective, but as a founder, to all the people who are watching, what are the couple of things you would like to say, that what are the best way of retaining the customer and having the repeat orders? One, for any business, when you talk about, because if the customer comes back again and again to you, you don't have to go and hunt for every day a new customer. They bring you more customers to you, and that is Absolutely. how the word of mouth happen. Even if you have a digital operations or you have a manual operation, doesn't matter at all. And I was happy to know Right. that scalability point when you shared that, okay, Ashish, maybe Smart Taxi may go on and plan something global as well, which is a good news. So maybe share that some of the tips for retaining the customer and setting the customer expectation right. These two things are very, very critical. I'm not at all asking from a Smart Taxi perspective, but from in general, what are the points which you would like to share?
customer retention के लिए this is the always what I say that you are never selling a product or a service. You are always selling a values to the customers. So always आपका focus value selling पे रखिए rather than selling or pushing your products or services to the customers, because and it is your duty to make customer understand that what values you are going to add into their life when they avail your product or services. So हमेशा से अपने प्रोडक्ट सर्विस उस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए जहाँ पे उनको वैल्यूज क्या दिखती है, वैल्यूज पे फोकस लगाइए रादर देन आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, दैट इज अ सेकेंडरी. उनकी लाइफ में क्या वैल्यू और होता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम. दूसरी चीज रिटेंशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज, मतलब आपने जैसे बताया है अभी के स्टार्टअप में, दैट इज द सिनेरियो वेयर expenses and losses are higher compared to the revenues, that is we call popularly as a cash burning. Okay, so हमेशा अगर मान लीजिए if you are a startup का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स की लाइफ कैसे इजी कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू वांटेड टू गेन. वैल्यूएशन, प्रॉफिट, स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग प्लान्स, प्रमोशंस, प्राइस, ये सारी चीजें उसके बाद में आती हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस रखना है. दूसरी चीज, हमेशा से अपने प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे बेचिए. never sell your product as a by just wanted to gain a sale. जैसे मुझे कोई सर्ज चाहिए, I wanted to become a $1 billion company, so मैं अपने रेवेन्यूज मतलब अपने प्राइस कॉम्पिटिटिव इतने रख देता हूँ कि जिसमें मेरे पास कोई मार्जिन नहीं बचता, मेरे एक्सपेंसेस आई एम नेवर कंसिडरिंग, ओके, आई एम मेकिंग लॉसेस स्टिल रनिंग द बिजनेस, so which I personally do not feel that this is the right way of doing business. आपको अगर if you are offering something to the customers, you as a business are liable to get something out of it too, चाहे फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, चाहे फिर वो उनके लॉयल्टी हो गया. सो उस वजह से अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को ऑलवेज राइट प्राइस पे बेचिए, जिसमें आपका भी प्रॉफिट हो, कस्टमर का भी फायदा हो, दोनों को बैलेंस करके आपको बिजनेस चलाना है. तीसरी चीज जो है, अगर आपने मान लीजिए शुरू के समय में अपने प्रोडक्ट को फ्री में या तो फिर लेस प्राइस पे बेच दिया बिकॉज ऑफ टू गेन अ सेल, whenever you wanted to bring back or whenever you wanted to gain certain extra amount from the customers, it will be very difficult for you. आपको लॉयल्टी कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज कस्टमर आपके साथ उसी लिए जुड़ा है बिकॉज आपके प्राइस कॉम्पिटिटिव है या मार्केट में सबसे सस्ते हैं. नहीं, कस्टमर को उसके लिए जोड़िए कि जैसे आपकी वैल्यूज. जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आज अगर मान लीजिए मारुति सुजुकी के जितने भी कस्टमर्स से दे कीप ऑन शिफ्टिंग टू डिफरेंट ब्रांड्स, क्योंकि उनके बिकॉज दे सपोज मान लीजिए कल Hyundai उठ के दे ब्रिंग अप सर्टेन न्यू फीचर्स, सो देन दे गेन देयर कस्टमर्स. बट आज आपने कभी बहुत कम ना होगा वेयर कंपनीज लाइक मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW, वहां से कभी कोई कस्टमर शिफ्ट नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ डे वन से उन्होंने अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे रखा है. दे हैव एक्चुअली एक्सप्रेस देयर वैल्यूज व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स, और उसी की वजह से आज मार्केट में 5,000 रुपए का भी फोन होता है और 50,000 रुपए के भी फोन होते हैं. स्टिल दोज हु आर बाय एप्पल, दे आर स्टिल बाइंग एप्पल डिस्पाइट ऑफ सेलिंग इट 1 lakh, डिस्पाइट ऑफ नॉट सेलिंग इट विद चार्जर, स्टिल पीपल आर गोइंग विद एप्पल. सो दैट इज व्हाट यू वांटेड टू गो एंड क्रिएट, कि आपको लॉयल्टी बिल्ड करनी है बाय सेलिंग योर वैल्यूज, नॉट बाय ऑफरिंग समथिंग एट अ चीप प्राइस और समथिंग एट अफोर्डेबल, बिकॉज उसमें आपकी कभी भी, तो ये हमेशा से रिटेंशन रहा है. तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँ रिटेंशन के लिए, आपके पास हमेशा स्टार्टअप्स ये गलती कर देते हैं कि जो उनके हाथ में है, दे आर नेवर फोकसिंग ऑन टू इट केयरफुली एंड दे ऑलवेज ट्राई टू गेन व्हाट इज नॉट इन देयर हैंड. सो अगर मान लीजिए मेरे पास 10 कस्टमर हैं, तो मैं उन 10 को ठीक से सर्विस नहीं दे रहा हूँ एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गेन, यार मेरे पास और 100 आ जाए, मेरे पास और 200 आ जाए. सो मेरा फोकस ऑलवेज वहां पे रहता है. इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक्चुअली फोकस यहाँ पे जो आपके हाथ में कस्टमर्स है उन 10 पे इतना अच्छी तरह से करना है कि वो 10 आगे जाके और 10, वो 10 जाके और 10 को लेके आए, एंड दैट इज द वे you will definitely, your growth might be slower compared to other companies, but जो growth आपके पास आएगा ना, वो वापस कभी नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज वो कस्टमर्स आपको और कस्टमर्स अपने आप लेके आएंगे, वही अपने आप आपको प्रमोट करेंगे. तो हमेशा से अपना जो फोकस है वो सबसे ज्यादा आपके पास जो लोग हैं उनको करने में रखिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टू डिफरेंट थिंग्स. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे फोकस नहीं करना है, बट अगर आप ठीक से अपने हाथ में जो लोग हैं उनको सर्व नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कांट एक्सपेक्ट न्यू कस्टमर्स टू जॉइन यू एंड यू सर्व देम वेल. सो हमेशा से ये चीज पे फोकस रखिए. तो दीज आर द 3 things what I always inform or to share with the founders, those who are into startups. एक तो हमेशा से अपने प्रोडक्ट राइट प्राइस पे बेचिए. कभी भी ऐसा मत करिए कि मतलब कस्टमर का रिटेंशन ऑलवेज उसी तरह से रखिए, उनको वैल्यू सेल कीजिए, देन ओनली गेन दैट और उनको वहां से ही डील कीजिए. और देन फाइनली थर्ड थिंग इज, जो आपके पास एग्जिस्टिंग आ रहे हैं एटलीस्ट पहले उनको ठीक से सर्व कीजिए, उनके फीडबैक सही लीजिए, उनका केयर कीजिए.
उसके बाद में वो डेफिनेटली आगे जाके कहीं ना कहीं आपको और कस्टमर जरूर लेके आएंगे। तो ये तीनों चीजें हैं टू आंसर टू योर क्वेश्चन आशीष अबाउट कस्टमर रिटेंशन। Thank you, Dhruvam. One more thing which people talk about, and I think so. I asked that also on the expectation side. I have experienced myself, and with the smart taxi, and a couple of other people who are focused on customer side, where I said to your executive purposely that your cost is too high, right? Yes, your cost was high, and I say that the cost is high compared to this and that. What do I do? It's not in my budget or something like that. And the way they respond, the way they communicate on that aspect, I really liked it. And I purposely did not respond to them for 2 days. Almost 2 days I did not respond to him whether I will take it or not take it. Okay. Despite, so he just responded very politely that okay, this is how it is, all that, and we are ready to serve you, etc. And after 2 days, I gone back and I say, okay, fine, let's book it. So this is how I think so. Setting expectation right, I really see and I really liked it. For doing that, what are the 1 or 2 tips you would like to give it to your colleagues or entrepreneurs who are working, that how to set the customer expectation right? हमेशा से जैसे मैंने इसके पहले आंसर में भी बताया है कि व्हाट वी जनरली फोकस इज वी डोंट वांट टू, मतलब हमारा कभी भी फोकस बिजनेस ग्रोथ पे नहीं रहा है. इफ समबडी कम्स विद देयर प्रॉब्लम टू आवर कंपनी, I have informed, it is a practice from the day one. It is not something which we are doing it right now. We are doing it from past 4 years. 2016 से मैं personally, जब when I was answering to the customers, we were focusing on to it. When my team is answering, I also told them कि कभी भी customers को उस हिसाब से कभी भी आंसर मत करो कि हमें आपके ऑर्डर्स में आपका कन्वर्जन चाहिए या फिर उनकी जो भी इंक्वायरीज है उसको साइड में रख दो, सर आप जल्दी बुक करवाओ. नो, उनके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमें पोलाइटली आंसर करना है. काफी बार कस्टमर्स ने ये भी हमें, जैसे यू पर्पसफुली डिड इट, देयर आर मेनी कस्टमर्स दोस हु हैव डिड इट दिस टू. सो वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज टेल कि नहीं यार आपके प्राइसेस ज्यादा है. हम उसके ऑलवेज सामने हमारी वैल्यूज जो उनको ऑफर करते हैं, विच इज देयर व्हाट दे आर गेटिंग इन कंपेयर टू मार्केट एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग, वी ट्राई टू एक्सप्रेस टू देम. हम कभी उनको फोर्स नहीं करते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि सर, और फाइनली भी आपने अगर देखा होगा कि हमारी लास्ट लाइन ऑलवेज वही रहती है कि वी आर ऑलवेज हैप्पी इन योर हैप्पीनेस. मतलब कि हम लास्ट में ये जरूर लिखते हैं, आई टोल्ड एवरी एग्जीक्यूटिव दैट प्लीज राइट इट टू कस्टमर. अगर कोई मानता है कि भाई हमें आपके साथ नहीं जाना है तो प्लीज डोंट इग्नोर देम, दैट इज फाइन, इट इज देयर कॉल एंड ऑलवेज इट रिमेन्स विद द कस्टमर के भी वो कॉल उन्हीं के हाथ में रहता है, चाहे वो फिर द स्मार्ट टैक्सी के चाहे फिर वो किसी और कंपनी के साथ जाए. दैट इज देयर विलिंगनेस एंड वी एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट. काफी कस्टमर्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि यार मेरे को तो ये चीज 1000 रुपए में मिल रही है, आप मेरे को 1500 रुपए में दे रहे हो, व्हाई शुड आई गो फॉर दैट. सो वी एक्सप्रेस द सेम थिंग टू देम. अगर एंड अल्टीमेटली हम वही लिखते हैं कि हमारे पास वट एवर वी रिस्पेक्ट कस्टमर्स राइट ऑफ ऑप्टिंग फॉर द सर्विसेज विच इज मोस्ट सूटेड फॉर देम. सो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाए, किसी और के पास ना जाए. नहीं, कस्टमर का अल्टीमेटली उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए. दैट इज व्हाट द कोर मोटिव what we hold as a business. चाहे फिर वो द स्मार्ट टैक्सी से सॉल्व हो, चाहे फिर वो ओला से सॉल्व हो, चाहे फिर वो उबर से सॉल्व हो, या फिर किसी और कंपनी से सॉल्व हो, जहाँ पे उनको सही लगता है. और प्रोबेबली यही रीजन है जिसकी वजह से लोग जब भी, मतलब मान लीजिए पहली बार हमसे मना कर देते हैं, दूसरी बार मना कर देते हैं, बट तीसरी बार जब उनको लगता है कि नहीं यार दिस टाइम आई नीड अ वेरी रिलायबल एंड प्रोफेशनल सर्विस, अगेन कम बैक टू अस. सो आज तक 61% हमारी इंक्वायरीज ऐसी रही हैं जिसमें लोगों ने पहली 2 बार इंक्वायरी करके दे हैव नॉट बुक्ड अस, उसके बाद में तीसरी इंक्वायरी में दे बुक्ड अस. सो दैट इज व्हाट वी वांट एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इनटू. सो हमने कभी भी कस्टमर्स को उस हिसाब से कहीं भी ट्रीट या डील नहीं किया है कि अगर कोई हमारे साथ हर बार आप आए हो तो आप हमसे ही लो. नहीं, अगर आप कहीं और से भी लेना चाहे हो दैट इज फाइन. वी आर सेलिंग दिस वैल्यूज, ये हमारे प्राइसिंग है, ये हमारे चार्जेस है. If it is feels suitable as per your requirement, you can book us. Otherwise, we wait for next inquiries or orders. और आज तक हमने यही किया है. और उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंक्वायरी कर दिया, हमने आपको छोड़ दिया, आपने मना कर दिया. हम आपको फिर भी, जब तक आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता है कि नहीं भी आप हमें अब जरूरत नहीं है, तब तक आपके पास फॉलो अप मैसेज आते हैं 2-3 दिन के बाद. हर 3 डेज 4 डेज के बाद हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कस्टमर को, सर आपकी प्रीवियस इंक्वायरी में कोई अपडेट है. अगर वो बोलता है कि है
तो फिर हम लोग उससे पूछते हैं, अगर वो बोलता है नहीं है, देन वी सिंपली क्लोज दैट इंक्वायरी बाय इन्फॉर्मिंग टू देम कि ये बार हमें लगता है कि आप मतलब आप हमसे बुक नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, अगर आगे आपके पास कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आर सर्विसेज इज वर्थ वैल्यू पेइंग टू यू, यू कैन श्योरली बुक अस। हमने कभी भी ये नहीं किया कि भी चलो हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, 1000 रुपए का डिस्काउंट देके कस्टमर से बुक करवा लेते हैं, नहीं, हम हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हम जानते हैं, हम जो स्टैंडर्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट लेवल ऑफ क्वालिटी सर्विसेज वी आर ऑफरिंग एंड व्हाट लेवल ऑफ कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन वी आर गेनिंग। सो हमने कभी भी हमारे स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं गिराया है, हमने उसी स्टैंडर्ड पे रखा है, एंड देन दैट इज हाउ वी सेट एक्सपेक्टेशंस टू द कस्टमर। और इसी की वजह से जो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, डिस्पाइट ऑफ एन नंबर ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, फिर भी वो आज हमारे से उतनी ही वैल्यू और इतने ही बिजनेस हमें और भी कंटिन्यूसली दे रहे हैं। Not only that, they are also gaining further new customers for us too, and they never bargain us with the prices, they always demand further services, and that is what we always operate, and that is what we never fail into delivering it. To answer your question, Ashish. Right. So I have one question from Ankit, and maybe since time is less, so I will just quickly answer this, and probably you can add also. Like where he's comparing that, okay, in India ऐसा नहीं है कि वैल्यू करते हैं, कस्टमर ओनली प्राइस की बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अंकित, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ऑल्सो प्रीमियम सर्विसेज, राइट? Like he said, Mercedes, not everybody can afford Mercedes. So if you are comparing Apple with Android cheaper phone, so for every segment there is a market, for every segment there is a product. Remember that. So it is, people are buying more Android does not mean they're buying only because of the pricing. It may be the budget also. Every customer has their own budget, every customer has their own paying capacity, so that's why there is a room for everyone to play. Now how you play in that room, how you give the service will make sure that are you retaining or not, are you going to sustain or not. That is very important. Would you like to add something here, and then we take it forward the next one? I think you are rightly said, Ashish, because there is a place for everything and there is everything at a place. So always ये रहा है, because there are people those who are buying Mercedes, so we know that what is the prestige they hold when they buy Mercedes. Same way there are people those who buy Maruti Suzuki as well, because as per that budget, and they also feel very loyal when they, or royal when they buy Maruti Suzuki too. So it is always there is a segment, there is a people and there is a budget. Always आपकी requirement क्या रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप सर्विस या प्रोडक्ट से क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है. So there is nothing like, I believe MI is also doing good into their segment and Apple is also doing good in their segment. So दोनों के अपने अपने कस्टमर बेस है और दोनों अपनी अपनी तरीके से फीचर, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं. So it is rightly said, Ashish. We can go to next one. Okay, so yeah, so let's move to the one very important questions, and it is not only for entrepreneurs, it is for everybody, right? Which is basically saying no. Saying no is was also very equally important, the way you say yes to a customer or yes to somebody, right? So anything you would like to add, Dhruvam, on this space, saying, okay, what are the ways, how do you, at what point you say that you, okay, you think so, you say should say no. Many people I've seen, instead of saying no to anybody or anything, they just go silence, stop responding calls, stop replying emails, messages, WhatsApp. Have a guts to say no. So would you like to say something on this, Dhruvam? Yes, see, generally Ashish, इसमें as a business, as a startup, whenever we approach to the customer, हमारे पास ये काफ़ी सारी, especially in terms of whenever corporate contracts की बात अगर मैं करूँ तो हमारे पास काफ़ी बार ऐसे instances आए हैं जिसमें customer they stop responding to calls. तो उसके लिए हमारे पास we have a process. हम 3-4 बार उनको पूछे हैं, we call them, then if not responding we send them an email. अगर उस पर भी वो respond नहीं करते, no, finally sorry to interrupt you. I'm asking about how do we say no? I'm just coming to that. I'm just coming to that. I'm not specifically asking or explaining about the business, but उसमें ये होता है कि देखिए no में क्या होता है कि जो आपकी कंपनी के कोर पर्पस हैं, जैसे कोई भी हर एक जनरल एक स्टार्टअप का ऑलवेज एक पर्पस होता है. दे हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स, दे हैव सर्टेन सर्विसेज. हमेशा से ये रहेगा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाहर की कस्टमर्स आपके पास आएंगे which you might not have the solution for that. So instead of keeping them in the dilemma that हमारे पास आंसर आएगा, it is always better. See, personally I always believe that we have to give either 0 or 100. There is no between 70, 50, 80 नहीं होता है.
अगर नहीं हो सकता है तो प्लीज क्लियरली उनको बता दीजिए कि सर दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट ऑफरिंग राइट नाउ, सो दैट इट विल सेव देयर टाइम। यहाँ पे अगेन आप कस्टमर का बेनिफिट कर रहे हो क्योंकि आप उनका टाइम बचा रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग देम, यू आर नॉट वेस्टिंग दैट टाइम। सो आगे जाके ही विल डेफिनेटली रिकॉल कि नहीं यार ये बंदा जो भी है अगर उससे नहीं होता है वो क्लियरली बता देता है कि मेरे से नहीं होगा सर, आप wherever you find the solution suitable you can go and do it। so ऐसे पॉसिबल है बिजनेस में, काफी बार हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास एज अ बिजनेस नहीं होगा, तो वहां पे दूसरी चीज होती है विच पर्सनली आई बिलीव ओके माई बी इट माई डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हमेशा से बिजनेस जो होता है वो कुछ वैल्यूज के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आप हर एक बिजनेस के सराउंडिंग में यू कीप सर्टन वैल्यूज, यू कीप सर्टन इंटीग्रिटीज, कुछ बाउंड्रीज के साथ आप बिजनेस करते हैं। अगर उस बाउंड्रीज के पास परे कुछ भी होता है, इफ इट इज बियॉन्ड दैट बाउंड्रीज, इट इज ऑलवेज बेटर टू से नो। जैसे मान लीजिए काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें आप लोग को कुछ यू हैव टू ऑफर सर्टेन एडिशनल बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ अ मॉनेटरी और मे बी नॉन मॉनेटरी, ठीक है, जिसमें वो उसकी वजह से आपको बिजनेस देंगे। तो ज्यादातर ऐसी डील में एंटर मत होइए जिसकी वजह से यू विल ऑलवेज बी मोर फोकस्ड, पीपल विल वैल्यू मोर फॉर द बिजनेस एंड दैट इज द इंटीग्रिटी विद व्हिच यू हैव टू डू बिजनेस। तो वहां पे आपको नो बोलना है। नो ऑलवेज ऐसे रहता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं दोज हु आर वेरी मैनिपुलेटिव इन सेइंग नो, कुछ घुमा फिरा के नो बोल देते हैं। देयर आर पीपल, फ्यू पीपल्स लाइक जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब हम लोग उस तरीके से बोलते हैं कि जिसमें कस्टमर को ये ना लगे कि भाई दे हैव इग्नोर्ड अस, ठीक है, और हमें मना कर दिया है। बट काफी बार हमारे कस्टमर्स ने ये भी, हमने काफी कस्टमर्स को बताया है कि सर हमारी जो सर्विसेज हैं वो इसमें ये चीजें आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी, तो वो उन्होंने सराहा भी है कि भाई दे आर गिविंग राइट एस्पेक्ट ऑफ द पीपल, दे आर गिविंग राइट एस्पेक्ट अबाउट द सर्विस टू द कस्टमर, सो दैट इट मेक्स देयर डिसीजन प्रोसेस इजी। सो नो बोलना इट इज नेसेसरी, क्योंकि काफी बार ऐसी चीजें आएंगी आपके पास जहाँ पे आपको नो बोलना पड़ेगा। हमेशा से अपने आप पे स्टैंड लीजिए, हमेशा से अपने वैल्यूज क्लियर रखिए, अपने थॉट्स क्लियर रखिए, अपना टारगेट ऑडियंस क्लियर रखिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास क्लियर है तो यू कैन डेफिनेटली से नो। और मैं पर्सनली मानता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। काफी बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे वी हैव टू से नो टू द थिंग्स, एंड आई बिलीव इफ यू फील मतलब उसमें फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे रहनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग समथिंग ऑन टू थिंक। जैसे आपने नो बोला है तो यू आर कंप्लीटली अकाउंटेबल फॉर दैट नो, और आप पूरा थरो स्टडी करने के बाद में ही उनको नो बताएं। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू आंसर टू योर क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ वी एज अ पर्सनली फॉलो एज अ ब्रांड इनटू द स्मार्ट टैक्सी एज वेल। Correct. Thank you, Dhruvam. I think so. That's very important point. I always talk about when I do a mentoring session of the founders or anybody. Otherwise, as a working professional, also saying no is super important, and it help you to decide actually what you will do, what you will not do, and that is very important. What is not important is that Exactly. what you will do is also important. What you are not going to do. So that is super critical. Okay, coming back to the point, because now the time is already running short. So let me share about one thing is that I would request all of you who are watching or who are going to watch this video later on, that you can join mentorkart.com and have the mentors like Dhruvam. Many other mentors are there. Hundreds of mentors are joining. Have the conversation. Ask your doubts and questions. Is free of cost. At least asking question on a chat or a text is free of cost, and then you can explore other services. A lot of live sessions and workshops are also being arranged. A lot of standard mentorship program which are running, especially designed for students. Separate program which is running recently we launched called a student mentorship program. And over to you, Dhruvam, and asking that what do you see the kind of role mentoring or mentorship can play in anybody's lives? Like MentorKart focus on that anybody and everybody needs a mentors at life at every stage, right? Some or other way. And that's how the concept and philosophy we brought in. So where a student also need help, the professionals need some questions that they have doubts, and even entrepreneurs. So any views on that part on MentorKart or mentoring, and then we conclude the session. See, it is always mentorship. I am always in a favor of that because mentorship मैं generally ये मानता हूँ because जितने लोग ज़्यादातर whenever you fail, मेरा always ये रहा है कि थोड़ा सा पोएटिक वे में मुझे एक्सप्लेन करने की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसको भी मैं उसी तरह से डिफाइन करूँगा। एक अंधेरा सा रूम रहता है जिसके अंदर आपके पास कोई लाइट नहीं है, यू डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि जितने भी बिलियनर्स हैं उनकी लाइफ में भी आई है, जितने भी गरीब हैं उनकी लाइफ में भी आती है। इट इज़ इन एवरीवन्स लाइफ।
सो मेंटरिंग ये होता है कि वो पूरे अंधेरा जो रूम में है, वहाँ पे आपके पास कोई भी लाइट नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ पे जाना है, तो वो एक गाइडिंग लाइट जो एक छोटी सी आती है ना, दैट इज व्हाट द मेंटरिंग प्लेज द रोल इनटू। काफी बार हमारे लाइफ में हम ऐसे सिचुएशन पे आ जाते हैं दैट वी डू नॉट नो कि वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है, इसका सोल्यूशन कैसे लाना है। तो ये सारी चीजों में मेंटरिंग ऑलवेज हेल्प करता है। तो जो भी आपके मेंटर्स आपके पास, डेफिनेटली मेंटरशिप मतलब मेंटर कार्ड के पास आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स दोस हु आर वेरी एक्सपर्टाइज इनटू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। सो जो भी आपको लगे यहाँ पे भी जिनके पास आपका सोल्यूशन है, उनके पास चाहिए, उनसे बात कीजिए, उनको मैसेज भेजिए, दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस। ओके, सो मेंटरशिप इज डेफिनेटली नीडेड। मैं भी पर्सनली आई हैव 3 मेंटर्स इन माय लाइफ। रतन टाटा को मैं अपना मेंटर मानता हूँ, दो हैव नॉट पर्सनली मेट हिम। मेरे फादर को मैं मेरा मेंटर मानता हूँ। थर्ड मेंटर इज माय वाइफ टू। ओके, सो इन तीनों को मैं ऑलवेज आई टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम देम, बिकॉज आई पर्सनली फील कि कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं होता। यू ऑलवेज नीड अ सपोर्ट फ्रॉम समवन एल्स टू गाइड यू। That is what the mentorship plays a role, and that is to answer your question too, Ashish. Thank you. Ankit is insisting me to, help him answer this quick question. So maybe take a few seconds to reply to Ankit, please. Dhruvam, what are your thoughts on automation of vehicle? Are we aware of AI technology being implemented in vehicles too? In few years, will be self-driving vehicles and communication? Yes, this was my field also. Yeah. So Dhruvam, you can answer this. See, there are self-driving vehicles, those who are actually in a testing. I have seen a lot of companies, those who are already pioneering into this. This self-drive, it is driverless vehicle, what basically in a taxi terminology. The smart taxi always, we have been geared up along with the technologies. जो भी हमें लगा है कि जहाँ पे हमारी core values compromise नहीं हो रही है, which is of human touch and personalized things offering to the customer, और हमारे core values in terms of a quality जो हम expect, मतलब जो हम देना चाहते हैं ground पे, अगर वो कहीं compromise नहीं होती है, तो we have always adopted that change. पिछले पास्ट में भी हमने काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किए हैं जिसमें ये दोनों वैल्यूज हमें सही लगी, एंड दीज थिंग्स वर एडिंग वैल्यूज टू इट, सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट। अगर आगे जाके मान लीजिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है जहाँ पे हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं या हमारे कस्टमर को पसंद आ सकती है, तो हम डेफिनेटली इसको भी इम्प्रूव करेंगे। देखिए, हम लोग जनरली जैसे अफेक्ट टू योर बिजनेस, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं, बिकॉज कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से तो आपको अफेक्ट जरूर करती है, तो हमारा कंसिडरेशन उस पर नहीं रहता है कि ये चीज़ अगर किसी ने इम्प्लीमेंट कर ली तो हमारा, वी ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम एंड वी ऑलवेज इवेल्युएट आवर प्रोडक्ट और आवर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम कस्टमर It's very परस्पेक्टिव। important. अगर हमें It's very यस, important. सो अगर हमने, सो हमें, हम ऑलवेज राइट टाइम का वेट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के इवेल्यूशन पॉइंट ऑफ पैरामीटर से ये प्रोडक्ट कितना फिट बैठता है, तो अगर उनको लगता है कि ये सारी चीज़ों की जरूरत है, if mass of the audience, if they feel it, those who are with customers with us, we definitely implement that, और आज तक हमने ऐसा ही किया है और आज आगे भी वही करेंगे। This is to answer to your question, Ankit. Great. So Yes, there are Ashish. a couple of more questions which you can answer those on the text if possible. Vishal Bogar and all. When you switch off, so maybe whenever you get a time, I think so. Vishal Dhruvam will take your question for sure, and he will answer. We are able to see that, and we will answer this on our chat. Thank you very much, Right. Dhruvam, for taking your time and Thank you so coming much. over, and I'm sure that I would love to have you on a platform also. Spend maybe 30 minutes, an hour a week on that. It'll be good idea. Thank you so Sure, much. sure. Okay, thank you. Thank you so much, and thank you, viewers. Thank you.